There is a slight difference of opinion. जब सरकार कहती है कि कश्मीर अब पूरी तरह से सुरक्षित है और फिर पहलगाम में गोलीबारी होती है, तो सवाल उठता है, क्या सुरक्षा सिर्फ भाषणों तक सीमित है? आज सुप्रीम कोर्ट ने यही सवाल सरकार से पूछा, और पूछा इतनी तीखी आवाज में कि पूरे सिस्टम के कान खड़े हो गए। आइए आपको बताते हैं कि कोर्ट में क्या हुआ, हमले के दिन क्या चूक हुई और कैसे एक बार फिर हमारे देश के आम नागरिक मारे गए बिना वजह, बिना तैयारी, बिना जवाबदेही के। सुप्रीम कोर्ट की सख्त निगाहें। 23 अप्रैल 2025 सुप्रीम कोर्ट में सुबह की पहली बेंच। कोर्ट नंबर 3 में जस्टिस सूर्य प्रकाश मिश्रा और जस्टिस विभा मेहता बैठे थे। मामला जनहित याचिका का था, लेकिन बहस जनहित से कहीं आगे बढ़ गई। याचिकाकर्ता वकील आलोक तिवारी ने अपनी दलील में कहा, 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष और निहत्थे पर्यटक मारे गए। हमले से पहले कई खुफिया एजेंसियों ने इनपुट दिए थे, फिर भी चूक हुई। सरकार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जस्टिस सूर्य प्रकाश ने सरकार से सीधा सवाल किया, अगर सुरक्षा बलों के पास खुफिया इनपुट था तो घुसपैठ कैसे हुई? सरकारी वकील घबरा गया। जवाब था, हम जांच कर रहे हैं। कोर्ट का अगला सवाल और तीखा था, क्या जांच तब होती है जब लोग मारे जाते हैं, तब आप एक्टिव होते हैं? कोर्ट का रुख साफ था, अब सिर्फ खाना पूर्ति से काम नहीं चलेगा, अब जवाबदेही चाहिए। पहलगाम हमला क्या हुआ था उस दिन? 22 अप्रैल 2025 का दिन था। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां चल रही थीं। सेना और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टुकड़ी पहलगाम के पास ओरली पॉइंट पर पेट्रोलिंग कर रही थी। दोपहर लगभग 3 बजे एक पहाड़ी के पीछे से गोलियां चली। पहले 2, फिर 7, फिर पूरी मैगजीन। 10 मिनट के भीतर कई पर्यटक जमीन पर गिर चुके थे। हमले के बाद सामने आया कि आतंकवादी घात लगाकर बैठे थे। उनके पास ऑटोमेटिक राइफल थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले कई आतंकी हमलों में इस्तेमाल की गई थी। हमला खत्म हुआ, 26 पर्यटक शहीद। अधिकतर पर्यटकों के सिर और छाती में गोलियां लगी। इलाका सुरक्षित घोषित किया गया था, फिर भी हमला हुआ। एक स्थानीय निवासी ने बताया, 2 दिन पहले कुछ अजनबी चेहरों को देखा गया था। पुलिस को खबर दी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सुरक्षा व्यवस्था में चूक, एक गहरी पड़ताल। जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो सबसे पहले खुफिया एजेंसियां आती हैं। IB, RAW, NIA, MI, इन सब की मौजूदगी कश्मीर में है, तो चूक कहां हुई? सूत्रों के अनुसार हमले से महज कुछ ही दिन पहले IB ने अलर्ट जारी किया था कि 3 से 5 आतंकवादी LOC के पास सक्रिय हैं और घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। इसके फौरन बाद एक और अलर्ट भेजा गया था, जिसमें पहलगाम और शोपियां जोन को हाई रिस्क बताया गया था। लेकिन क्या हुआ? सीआरपीएफ को कोई अतिरिक्त ब्रीफिंग नहीं दी गई। स्थानीय पुलिस को रूटीन ऑपरेशन के लिए भेजा गया और सेना, वो भी उसी भरोसे थी जो हर बार सरकार देती है, सब ठीक है। ये सिस्टम की नाकामी नहीं, सिस्टम की सुप्तावस्था है। एक पूर्व अधिकारी ने नाम न छिपाने की शर्त पर कहा, अब खुफिया इनपुट को राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। अगर कोई इनपुट चुनाव के वक्त आता है तो उसे वोट डैमेजिंग कहकर इग्नोर किया जाता है। खुफिया एजेंसियों की नाकामी। पहलगाम हमला ये साबित करता है कि देश की सबसे संवेदनशील घाटी में इंटेलिजेंस गहरी नींद में थी या उसे जागने की इजाजत नहीं थी। गृह मंत्रालय के तहत आने वाली एजेंसियां अक्सर डेटा शेयरिंग में सुस्त रहती हैं। NIA और RAW के बीच तालमेल की कमी की वजह से हमलों के पहले इनपुट फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। 2019 के बाद केंद्र ने कहा था, कश्मीर अब शांत है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी से डिस्कनेक्ट बड़ा है। एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा, राजनीति ने सुरक्षा को पीछे धकेल दिया है, फोकस स्टेटस रिपोर्ट पर है, रियल ग्राउंड नहीं।
सरकार की चुप्पी और लापरवाही। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई बयान नहीं आया। गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट किया, हम शहीदों को सलाम करते हैं, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं। क्या आप समझते हैं इस चुप्पी का मतलब? सरकार अब स्वीकार नहीं करती कि घाटी में खतरा है, और मान लिया तो न्यू कश्मीर की ब्रांडिंग पर सवाल उठ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? 23 अप्रैल 2025 की सुनवाई में कोर्ट ने कहा, राज्य और केंद्र दोनों जिम्मेदार हैं। जस्टिस विभा मेहता ने कहा, क्या हम हर बार इंतजार करेंगे कि जवान शहीद हो फिर जांच बैठाएं? सरकार ने कोर्ट से समय मांगा। कोर्ट ने कहा 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करें। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भेजा कि सुरक्षा रणनीति में बदलाव कब और कैसे होगा, घाटी में स्थानीय समर्थन फिर कैसे बनाया जाएगा। यानी अब बात सिर्फ हमले की नहीं, पूरे सिस्टम की विफलता की है। ये सिर्फ पहलगाम की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जो देश के आम नागरिकों की सुरक्षा की तैयारी नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाए हैं वो हम सबके हैं। अब वक्त है कि जवाब भी सबको मिले। Let's refer to one of the paragraphs of the judgment. Accordingly, the questions of law referred to are answered by stating that the court has limited power under Section 34 and 37 of the 1996 Act to modify the arbitral awards. This limited power may be exercised under the following circumstances. 1. Where the award is severable by severing the invalid portion from the valid portion of the award as held in Part 2 of our analysis. 2. By correcting any clerical, computational, typographical errors which appear erroneous on the face of the record as held in Part 4 and Part 5 of our analysis. Post-award interest may be modified to, in some circumstances as held in Part 9 of our analysis. And or Article 142 of the Constitution applies, albeit the power must be exercised with great care and caution and within the limits of constitutional power as outlined in Part 12 of our analysis. There's a slight difference of opinion between the majority and Justice Vishwanathan, and Justice Vishwanathan will read out that this judgment approaches the issue by maintaining the conceptual distinction between modification and severance. Whenever modification is discussed, it is to examine whether a Section 34 court can change, vary, or qualify an award. Whenever severance is discussed, it has to be understood to mean to separate and disjoin. Parties have also canvassed arguments based on the distinction, while the rival parties were daggers drawn on the aspect of the power to modify in the Section 34 code. There was unanimity on the power to sever, subject to conditions compatible with severability. After discussing, setting out the arguments and the ecosystem of arbitration, particularly Section 5, the overarching note of restraint in judicial intervention as set out in Section 5, the proscription for intervention set out in Section 13.5 and 16.5, the range of options under Section 33 for the parties and the arbitrator to carry out repairs to the award in the manner set out therein, the limited option to seek recourse to set aside on prescribed grounds with the shackle within inverted commas only if in Section 34.2 and the further safety valve available in Section 34.4 to go back to the arbitrator under circumstances mentioned therein are clear pointers about the acutely circumscribed nature of the power in the Section 34 code. This viewed in the background of the fact that parties have with open eyes contracted to go for arbitration and subject themselves to the parameters prescribed in the Act after ousting the normal judicial process clearly indicate that parties were conscious of the limited roles of the courts in the review of the arbitral awards. The absence of express powers to modify for a court hearing objections against the award when such a power existed in the Precursor Act also points to the legislative intent. It is in this background that the arguments of the parties clamoring for reading into of the power of modification needs to be tested. Thereafter, case laws have been discussed, arguments have been dealt with. The argument that absurdities will result and hardship will be caused if power to modify is not read into as no merit. There are at least two compelling reasons to hold so. The Arbitration and Conciliation Act in Section 43.4 itself contemplates that on the setting aside of the award, the option is to commence proceeding, including arbitration with respect to dispute. The lawmakers are fully conscious of the situation that setting aside of the award
will result in the dispute continuing to be thrown open at large, since notwithstanding the setting aside of the award, the legal position is that the arbitration agreement survives except in situations where the order setting aside has findings impinging on the validity of the arbitration agreement itself. And hence, recommencement of proceedings, including arbitration proceedings wherever legally maintainable, being expressly contemplated in the statute, the same cannot be brushed aside on the grounds of causing hardship to the parties. Parties will no doubt have all contentions open. The second reason is equally compelling. As briefly discussed earlier, when parties agree to arbitrate, they consciously with open eyes agree to step out of the normal judicial process and submit their dispute to a third party. Parties then are also conscious that when they agree to arbitrate, their rights and liabilities will be governed by the regulating act, which is the Arbitration and Conciliation Act. In that sense, there is a contractual ouster subject to the terms of the Arbitration and Conciliation Act or the normal judicial process, and the said course of action is sanctified under Section 28 of the Contract Act. Thereafter, we have contrasted it with the appellate power of the Civil Procedure Code and how the powers are different. In view of this, the Section 34 Code, unless expressly authorized by law, cannot modify or vary the award, since it will be tantamount to exercising the powers of a merits review when parties have contracted to have their disputes referred to a third party outside the normal judicial process for adjudication of arbitration. Then we have dealt with the various arguments about lesser power. We rejected all of them. We dealt with party autonomy, not reading all of them. From the reasons stated in the earlier part of the judgment, it is crystal clear that the court's exercising powers under 34, which will include the appellate hierarchy, cannot change, vary, or qualify arbitral awards, as it strikes at the very core and root of the ethos of the arbitration process. Such an excess of power will derogate from the core aspects of the Arbitration and Conciliation Act and will breach a preeminent prohibition in the Act. In view of this, my finding, which is the first point of difference, is hence in matters arising out of Section 34 of the ANC Act, this court will refrain from exercising powers under Article 142 in view of the law laid down in SCBA and Shilpa Shailesh. I have also said that it will lead to uncertainties if such a power is reserved at the very end in the litigation process. The other aspect where I have disagreed with the opinion of the learned Chief Justice is on the power to interfere with the post-award interest. I have taken the view that the power option is to remit the matter under Section 34(4) to leave the arbitrator to do the correction. And I also flagged the concern raised at the bar that it could result in complication in enforcement of awards internationally, because there is a conceptual distinction between enforcing a foreign judgment and enforcing an award. And I have since had the benefit of reading the judgment of the Honorable Chief Justice. In my judgment, I have independently given my reasons on each of the issues arising herein. The judgment of the Honorable Chief Justice grants power to the Section 34 Court to modify the post-award interest. I am not able to agree with the said view for the reasons stated herein above. Equally, the judgment of the Honorable Chief Justice permits the exercise of power under Article 142 of the Constitution to modify the award, though it has been stated in the judgment that the power must be exercised with caution. Here again, I am not able to agree with the said view for the reasons stated in my judgment. Conclusion: the court exercising power under Section 34 and the courts hearing appeals thereunder have no power to modify an award. The power to modify is not a lesser power to that of the power to set aside, as the two operate in separate spheres and are not of the same genus. The inherent power under Section 151 CPC cannot be used to modify awards, as it will be contrary to the express powers mentioned in Section 34. Similarly, there is no scope for applying the doctrine of implied powers to modify the award. Article 142 of the Constitution will not be exercised by the court to modify awards caused by arbitrators, as it is well settled that the Article 142 power cannot be used to give a go-by to any substantive statutory provision. Interest awarded also cannot be modified in excess of powers of setting aside, and the course of action under 34(4) will have to be adopted as discussed in the judgment. Hakim Supra is not per imperium insofar as it held that Section 34 court cannot modify the award. It will be read with only the exception made in the judgment now. On the principle of actus curia nevenum gravavit, computation, clerical and typographical errors or other errors of similar nature is permissible to be corrected by the Section 34 Code. Kiranari Malik does not lay down the correct law insofar as it holds that the request under 34(4) to the court by a party to grant an opportunity to the arbitral tribunal to resume proceedings or to take such other action as to be in writing. Even an oral request under 34(4) can be entertained by the court.
The power under 34(4) can be exercised by the court suo motu also under the circumstances set out here and above. A court under section 34 and the court's hearing appeals thereafter have the power to sever parts of the award in excess of the powers of setting aside awards under 34. However, while severing, the parameters set out here and above and flowing from the judicial precedents discussed therein have to be followed. And answers to the reference have been given. Appreciation is recorded for the painstaking efforts put in by the learned Solicitor General and all the learned senior counsels who addressed arguments, and also to the teams assisting them. The reference is disposed of in the above terms. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।